Okay, so hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So today we'll be doing some of the enzymes MCQs. Since we were done with enzymes MCQs from guestbook, now this is from an NAT preparation, which is NUST test, and this is the PDF of OETP, means past papers of NUST biology. Fine. So our first question is, which of the following is not the character of reversible inhibitor? मेरे पास रिवर्सिबल इनहिबिटर का कौन सा ऐसा है जो कि करेक्टर नहीं है? तो पहले तो their effect can be neutralized by change in substrate concentration. This is correct. जब भी हम substrate की concentration को change करते हैं तो उनका effect क्या होता है? न्यूट्रलाइज्ड होता है. दूसरा, they form covalent bond. तो वो कभी भी covalent bond नहीं बनाते हैं active site पर. They may have structural similarities with the substrate. Yes, उनके पास structural similarities होती हैं substrate से. They may form enzyme inhibitor complex at the point other than active. Yes, अगर हम वो active site पर नहीं लगने के बाद अगर substrate दूसरी site पर लग गया है तो वो हमारे पास enzyme inhibitor बनाता है. So here the correct option is option number B. They form covalent bond, which is not the characteristic of reversible inhibitor. Then moving towards question number 2, the requirement for enzyme activity include what? So whenever we do perform the enzyme activity, the requirement is they can contain aqueous medium plus there should be the suitable temperature, which is 37 degrees Celsius. So the C option will be correct, both A and B. Then which of the following is not a characteristic of enzyme? So we know enzymes are very specific in nature. They are very sensitive to pH, temperature, and enzyme concentration and substrate concentration. Then during the reaction, they lower down the activation energy. Correct. The general mode of action. The enzyme, the general mode of action is not the characteristic of enzyme. Fine. After that, non-protein part covalently bond with enzyme. We have protein part which is apoenzyme, and when non-protein part bond with the enzyme, they form what? They form prostatic group. After that, increase the temperature beyond the safe limit. जो हमारे पास safe limit है which is 37 डिग्री सेल्सियस. अगर हम 37 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर ज़्यादा इंक्रीज करें, बढ़ा दें, तो क्या हो जाएगा? डीनेचर हो जाएगी इनकी एंजाइम की एक्टिविटी विच इज एट 100 सेल्सियस. डीनेचर हो जाती है. व्हाट इज द पीएच ऑफ फ्रेश सलाइवा? फ्रेश सलाइवा की पीएच क्या होती है? तो द पीएच ऑफ फ्रेश सलाइवा इज 8. देन वी डू हैव a hollow enzyme is activated enzyme having what? एक hollow enzyme जो कि क्या है? एक activated enzyme का क्या होता है? तो remember hollow enzyme is the enzyme which contain both polypeptide chain and a cofactor. Cofactor is the non-protein part. Then question number 8, adding the correct concentrated coenzyme. जब भी हम एक correct amount में correct concentration डालते हैं किसकी? coenzyme की, apoenzyme के अंदर, देन डैश हैपन, तो वो अपनी एनर्जी को क्या कर देता है? रिस्टोर कर देता है. जब भी ये याद रखना, जब भी हम करेक्ट कंसंट्रेशन डालेंगे कोएंजाइम की करेक्ट कंसंट्रेशन डालेंगे किसके अंदर? एपोएंजाइम के अंदर, तो वो क्या करेगा? वो रिस्टोर करेगा एनर्जी एक्टिविटी को, एंजाइम की एक्टिविटी, सॉरी. देन वी डू हैव एन इनडायरेक्ट ब्लॉकर एंड इनहिबिटर आर, जो कि एक्टिव साइट की जगह पर नहीं लेकिन दूसरी जगह पे ब्लॉक करते हैं, तो दो आर नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स. Then we do have normal temperature at working of human enzyme. So human enzyme work at 37 Celsius, which is a normal temperature. After that, deattaachable cofactor is called activator. एक ऐसा कोफैक्टर जो कि डीअटैच हो जाता है उसको हम कहते हैं एक्टिवेटर. और जब वो क्या हो? जब वो इनऑर्गेनिक काउंट हो तभी वो क्या होगा? डीअटैच हो पाएगा. एक डीअटैच कोफैक्टर, ठीक है, जब वो क्या हो? जब वो एक्टिवेटर कहलाता है.
कब, जब वो इनऑर्गेनिक आयन हो. Then year in which modified fit hypothesis was proposed, 1959, which was performed by Koshland. Then an enzyme which with its coenzyme removed. एक ऐसा एंजाइम जब उससे हम कोएंजाइम रिमूव कर देते हैं तो दैट इज नोन एज एपोएंजाइम. ठीक है, एपोएंजाइम. So these were some of the MCQs of enzyme portion from next past paper OETP. In the next video, I'll be discussing about a star. Till that, bye bye.